Today we're going to talk about CET 96 percentile story. So हमें दो पार्ट में इसको करना है. नंबर वन कि आपने CET में क्या किया जी. एंड नंबर टू अभी VBS कॉलेज आने के बाद हाउ इज योर लाइफ गोइंग. सो हम दो पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट योर CET स्कोर. हाउ मच यू स्कोर्ड इन CET? So I scored 96 percentile in my CET. And और कब था आपका डे 1 डे 2 डे 3 कब था आपको? it was day 3. डे 3 में सबका काटा गया है तो इनका भी काटा गया है. तो इफ यू आस्क मी ना, आई एम अज्यूमिंग बिफोर आई नो अबाउट योर बैकग्राउंड कि जिस जो डे 3 वाले थे ना उनका एक्चुअली 98 परसेंटाइल होगा और आपको 96 दिया गया है. Right. सो आई एम श्योर मॉक्स में ऐसा हो रहा होगा आपका. मॉक्स में यू आर स्कोरिंग बेटर देन दिस के? No, mocks mein I was certainly better than this, and I was hoping for miracles in the end, of course, because I was scoring in the vicinity of 130 to 140 in the mocks constantly. But things turned south that day, so it happened. यार यही सीटी का प्रॉब्लम है कि उस दिन लक Yeah. उस दिन के ऊपर है तुम्हारा कि Yeah, साथ है it तो- is that कि एक छोटा सा आपका मिस्टेक हो या कुछ भी हो या फिर एनीथिंग हैपन्स आपके अगेंस्ट तो पूरे पेपर की ट्रैजेक्टरी चेंज हो जाती है. सो हाउ यूज्ड टू मैनेज योर डे? उस दिन आपने क्या स्ट्रेटजी लगाया कि पहले मैथ्स करना है कि पहले वर्बल करना है कि जंबल्ड अप करिए, कैसे? सो सिंस लास्ट 2 ईयर से पेपर जम्बल्ड अप आ रहा है तो जो सेक्शन वाली स्ट्रैटेजी है वो वर्क नहीं करती, ये एविडेंट था. बट उसमें एक और था कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे कि जो हम एक मिनट नहीं सॉरी 15 to 20 सेकेंड्स में कर सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग व्हाट आई डिड इज कि आई वेंट थ्रू द कंप्लीट पेपर एंड विच एवर क्वेश्चन आई कुड अंडरस्टैंड विद इन 10 seconds or 8 seconds, I solved that within 15 to 16 seconds, including the reading of question. And then that way in 1.5 hours I was done with 140 questions and I was left. ये आपका बेटर पार्ट क्या, बेस्ट पार्ट क्या था? स्ट्रेटजी वर्क फॉर यू बिकॉज आपका पेपर स्लाइटली इजी था. Yes, डे true, 3 का. true. डे 2 वाले ये स्टडी पे नहीं कर सकते. No, या of course कर भी not. लोगे तो तुम्हें 100 क्वेश्चन हो पाएंगे. 100 True. इजी था, 100 थोड़ा एडवांस था. तो आपने पहले वो सारे खत्म जी, कर जी, दिए जी. एंड Right. देन यू मूव टू द हाई लेवल. Right. So you scan through full paper? So Yes, you I did scanned to the full paper. 2 rounds. Now round 1, Yes, and complete the round- paper and then round 2 2. complete the paper. Yes, and even after that I was left with 15 to 20 minutes, so round 3 of checking was also there. अच्छा 3 rounds of Yes. question you did. Good यार. तो पहले पूरा सॉल्व किए, इजी वाले कर लिए, जी. देन भारी वाले किए एंड देन यू डिड द रिवीजन ऑफ द. Yes. सो ट्राई करके देखो यार, ये मॉक में अगर जमता तो बिकॉज सीईटी के मॉक में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई दिस स्ट्रेटजी. True. तो अगर आपको ये जंप आती है तो यू कैन ट्राई इट आउट. अदरवाइज आई नॉर्मली यूज द 30-40 स्ट्रेटजी. Right, right. ब्रेक में कर दी नो 30. Right. I absolutely know. I've seen the video. फिर ट्राई भी नहीं किया. I did so, but the other उस दिन लगा कि ये वाली स्ट्रेटजी शायद ये मेरे इसमें बेटर काम करे इसलिए. राइट. इसलिए मैं क्या बोलता हूँ सबको कि भाई एग्जाम के एक हफ्ता पहले फाइनल कर लो. Right. अभी चेंज नहीं कर सकते. True. Whatever, even if your strategy is bad, don't change the strategy at last minute. क्योंकि उस समय एडजस्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे. बिकॉज इसकी जो स्ट्रेटजी है वो आपके काम नहीं आएगी. Yes, मेरी possible. स्ट्रेटजी उसके काम नहीं आएगी. So always finalize your strategy way before the exam. Very true. Right. Now we'll move to the second part of the day. कि now once you have joined VBS college, तो यहाँ पे आके you are going to finance. Right. So that is what your this thing. So we'll talk about that now. Sure. So since पहले कर ली था. अच्छा हाँ right. Okay. Good show. चलो thank you. Guys, today we look at MBA finance point of view. So I want to know about the day-to-day activities you are doing at the college. ताकि MBA का बच्चा वो सब कर सके. So let's start with the introduction first. Sure. So my name is Sanket Sonali Deshmukh. I'm from Chhatrapati Sambhajinagar, and I shifted here 6 months ago because I saw VBS as a golden opportunity which would give me a kickstart to my career, and my specialization is finance. So the day-to-day activities that we conduct here are research oriented, and these are oriented from a point of view that we understand how the markets work. So let me just tell you by an example how we learn in the class. It's not a normal, what can I say, theory kind of teaching. When our ma'am comes into class, so it's not that she'll just tell us about securities market. She'll ask us that, okay, these are the terminologies, I'll give you 5 minutes, please do your research on this, come in front of the class, what do you feel, what have you learned, please present. And then she'll evaluate us on that criteria. So it is not just about learning but at the same time also fighting the stage fear, coming in front of the crowd and then presenting yourself. And it's a very, I would say, research based application method of teaching, because here we are not just then going in the theory part, but if you ask our students, they'll know what are the market trends, what is going on, what kind of fundamentals of a company have changed that led to the changes in the stock prices and all. So that kind of how it works. Right. So this is a good idea that you are trying to kind of bring the boundaries. कि ये नहीं तुम सिर्फ किताब से पढ़ो. Yeah, exactly. You have to understand and learn from the environment, Exactly. other companies as well. Absolutely. Great.
Let's move to certification point. मेरे को आपसे दो क्वेश्चंस में, एक नंबर वन, what kind of certification you have done? नंबर टू, बिफोर आई जॉइन द MBA कॉलेज अगर मैं कुछ कर सकता हूँ अभी, बिकॉज आपने भी लास्ट ईयर दिया था, सो कॉलेज एग्जाम खत्म होने के बाद, और सर्टिफिकेशन यू लाइक टू रिकमेंड जो आपने की हो, जो मैं अभी कर सकता हूँ, सो दैट आई कैन बिल्ड अप माई प्रोफाइल बिफोर आई जॉइन द कॉलेज. So I'll tell you what kind of certifications I did initially before coming to the college. So at that time I wasn't fixed that what kind of specialization I wanted. So मैंने Six Sigma Green Belt and Six Sigma Black Belt I did from Henry Irwin. But I think if you know your specialization, let's say for example finance, then you should go for at least financial modeling. You should know the basics of Excel. You should do a course about securities market or trading options. So that will create a good profile, a good base for them to create a good building on. I can दो say. तीन कोर्स किया तो बहुत हो गया कि you want us to do 6-8 courses? I think 2 to 3 courses before MBA is fine, because when you come here, when you come to VBS, you will get more things, because we finance students have been given 25 plus courses from NSE, that is National Stock Exchange, and You can take all. yes, we can take all. We've been करना ही है, कर सकते हो. it is करना ही है तो it is mandatory, because अच्छा. college is very stringent and very serious about how are they developing their finance curriculum. And the thing is that many a times we see in the market also people don't have that core finance knowledge, but doing these courses will tell you what kind of, because there is a special course on option strategies. So this way, I mean, many different things, 25 plus courses, so you can become a full package there. Great. Thank you very so much. much.